Welcome back to the second session of this statistical thermodynamics. As we have seen in my first part, that is part 1, I have derived the internal energy and average internal energy from the partition function, molecular partition function. Now, in this part, what I will do, I will derive the heat capacity at constant volume using that internal energy or molecular energy value. As usual, it is a student centric derivation and I have referred large number of books for the derivation, but for the sake of student simplicity, I will use the most simplest derivation of heat capacity at constant volume. Now, you know that the formula of heat capacity at constant volume is nothing but when there is a change in internal energy with respect to temperature at constant volume. So you all know it is a very common definition that heat capacity at constant volume is the amount of energy required to raise the temperature of a substance 1 degree centigrade or 1 Kelvin. So it is, why so it is simple? It is a 5-minute job because we have already derived that internal energy is equal to R T square d by dt, natural log of Q is the partition function, of course molecular partition function. So what I have to do? I have to substitute the value of E and differentiate it. So what I have to do, dy of dt of what? R T square, R is a constant, I get d by dt of natural log. It is a product rule, you know. If I just R outside, R is a constant. So first function T square, differentiation of second, so T square del square dt square ln Q. Second function dy dt, differentiation of first, you know that nx ny. So it will minus, or if I just differentiate 2t, so I will get this value. So I will just of course explain it very simply. So substitute this value. So dy dt R T square dy dt natural log of Q and Q and d. So in some book, what you will find that after the differentiation, because the formula will be very big, so it can be simplified. That will be R by T square d square natural log Q d1 by T square. So let me just solve it. It is very simple. For the shortage of the time, I have just written here. So you know that R is a constant. So I have to just applying the product rule. So you know that this first part, this differentiation of second with respect to d by d. So del square natural log of Q dt square. Then this part T square x square d by dx x square, you know, 2x. So 2t and as it is. So our result is okay. Cv is equal to R T square delta T square d. So only 5 minutes. But
if you see the books and other things, you will get that this equation can be written as r divided by t square natural log of q, then same t 1 by t square. So for that, again, the solution is very simple. That means we will first determine the dx and dt and d by dx. I'll show you. And suppose x is equal to 1 by t. So, or you can go to t inverse 1. So if you write, अगर आप इस फॉर्मूला को भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये काफी बड़ा फॉर्मूला है, उसका सिंप्लिसिटी again because there are large number of biology students and mathematics students, so for biology students I am doing all this part, that is called the differential teaching, customized teaching as per the, because most of the students, all the students in the class are unique, they have different capacities, so I just solve it. Now from our main equation I have to, इस फॉर्मूला को हमको लाना है. कौन सा फॉर्मूला से लाना है? ये हमारा फॉर्मूला है, टी स्क्वायर 2t d plus t square like that. So what I am doing, yes, so first suppose x is equal to 1 by t, इसको अच्छे से समझ लीजिए, and if I want to differentiate it, dx dt, और ये मान लीजिए इसका ऐसा लिख सकते हैं ना, t inverse 1 nx n minus 1 like that. So what I will get, nx n minus 1, n is minus, so it will be minus, so t minus. So I can write 1 minus t square. So here I write dx by dt is equal to 1 by t square. Then second, I have to write d by dx. For that, because how could I write dx upon dt multiplied by d by dt, dx. So here you see that d by dt. I have to determine d by dx. It is actually dx by dt. So sorry, first just remove it. D by dx. So I write here so first 1 by t square you have determined. Then I have to determine the d by dx, because we know that. How do I get it? If I write dt and dx multiplied by d by dt, dt dt cancel हो गया, d by dx. So as because dx by dt is equal to minus 1 by t square, if I write inverse it, if I inverse it, इसको रिमूव करने का कुछ है क्या? नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये है क्या सर, जरूरत नहीं जरूरत. So if I dx by dt minus 1 by t square, so dt by इसको उल्टा जस्ट हो जाएगा, so minus t square.
उल्टा कर दिया हमने, रिवर्स माइनस टी स्क्वायर बाई डी टी, ये आ गया. So I am getting two value. First is the dx by dt minus 1 by t square, and d by dt is equal to minus t square t by dt. Dx by dt. The two values. One is, so I am getting d by dx is equal to minus t square t by dt. Now I have to substitute this value. So differentiate with respect to x. Now d natural log of q of dx, and so d by dx is equal to d minus t dt square. Okay, I am writing d by dx natural log of q. So I am getting the values of d by dx is equal to minus t square d by dt of natural log of q. That means I have to differentiate it. So here you can see here, if I differentiate it, d by dx. So d square del x square natural log of q, and again it is d by dx of minus t square d by dt natural log of q. ये जैसा हमने लिखा है, दिस इज d by dx differentiation with respect to x, differentiation with respect to x, ये हमने लिखा है. And I have to substitute the value of d by dx from here. ये देखिए यहाँ पे दिया, so minus t square d by dt. So what I have to do, just a simple differentiation, कुछ नहीं करना है. आगे नहीं हो रहा है. Yeah. तो ये कहां से आ गया? It is nothing by d by dx. So yeah, what I am doing, I am just doing this part. इस पार्ट को भूल जाइए, इस पार्ट को देखिए. तो d by dt ये है माइनस टी स्क्वायर डी बाई डी नेचुरली. ये तो है, ये ऑलरेडी हमने इसको बाहर कर दिया, मान लीजिए ये पार्ट को हमने बाहर रख दिया. इस पार्ट को बाहर रख दिया, हम किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं? इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन द सेम थिंग, हियर इज आल्सो टू पार्ट. आई कैन राइट फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड. दैट मींस आप सेम लिख सकते हो, माइनस टी स्क्वायर डी स्क्वायर नेचुरल ऑफ क्यू डी टी स्क्वायर. दूसरे का अगर हम करेंगे, इसका करेंगे माइनस टू टी डी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू एंड डी. पहले का एक कर लिया तो सेम रहेगा, बट हियर इज ऑल्सो माइनस, हियर इज ऑल्सो माइनस. हियर दिस इज डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर एंड दिस, एंड एज इट इज रहेगा. और इसका डिफरेंशिएशन कर लिया तो डी स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ टू डी टी स्क्वायर. इसका करेंगे तो इसका कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम रहेगा. डी बाई नेचुरल लॉग ऑफ क्यू डी टी सेम रहेगा. और ये माइनस टी स्क्वायर करेंगे, टू टी होगी. इट इज वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन. अब ये टी स्क्वायर जो है इसके साथ को मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो टी स्क्वायर है, हियर इज ऑल्सो माइनस, हियर इज ऑल्सो माइनस, तो प्लस हो जाएगा. ये देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है.
सो ये टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये टी, ये माइनस माइनस प्लस, तो हमको ये वैल्यू मिल गया. Now what is our original equation? Original equation is this equation. Original equation is this equation, like that. This is our original equation. 1 divided by t square, natural log of q dx square, 2t natural log t square, natural log. Now just again you compare these two equations. This is our original equation. So इसमें आ जाइए 1 by t square, ये t square कहाँ से आ गया? this t square, ये कहाँ से आ गया? ये इसको हम यहाँ ले आए, this t square को यहाँ ले आए, ये देखिए यहाँ ले आए, ये 1 by t square, this square natural log, ये जो फॉर्मूला आपका हम लोग निकाले. एंड आवर नॉर्मल डिफरेंशिएशन, जिसको आपने सी भी इक्वल टू आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू कॉन्स्टेंट, ये था, ये ई था, और इसको आपने क्या कर दिया? डी बाई डी टी ऑफ ये वैल्यू कर दिया. इसका जब डिफरेंस आर को, क्योंकि आर कांस्टेंट है, टी स्क्वायर, ये हमारा ओरिजिनल है. अगर इतना लिख देंगे तो भी आपका हो जाएगा. नाउ यू जस्ट यू कंपेयर दिस टू थिंग्स. आप देखेंगे दीज आर सेम. टी स्क्वायर डी स्क्वायर नेचुरल ऑफ क्यू, सेम थिंग. सो दैट मीन इन दैट प्लेस आई कैन राइट सी भी, इस पूरे जगह में हम इसको लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं. तो डी स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ क्यू टी स्क्वायर डी, क्योंकि डी एक्स जो है, एक्स जो है 1 बाई टी है. एक्स इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था? आपने देखा शुरू में 1 बाई टी, एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी. तो इसमें कोई समझने का बात नहीं है, केवल थोड़ा सा सिंपल डिफरेंशिएशन, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स भी नहीं है. एंड यू विल गेट द फाइनल वैल्यू. So again I can repeat the same thing, that x से हमने स्टार्ट किया 1 by t, फिर हमने dx by dt का वैल्यू निकाला. Then I will determine the d by dx, dt dx से निकाला, and then उसको डिफरेंशिएट किया, and then you equate these two equations, and I will get this final equation. So either you write CB is equal to this big formula, or it is one simplified form. Mathematics students can directly solve it, but for clarity and novelty, I am just using this simple derivation, so finally I will get this value. So what I mean to give the message to you, that as per the requirement or as per the formula, you can determine one after another. तो आज हमने आपने देखा कि सबसे पहले मैंने इंटरनल एनर्जी निकाला, इंटरनल एनर्जी से सीवी निकाला. क्यों कैपेसिटी निकाला? बिकॉज दैट इज डायरेक्ट रिलेशन. सिमिलरली नेक्स्ट क्लास आई विल डिटरमाइन द एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी. एंट्रोपी यू नो दैट G is equal to H minus P, or that H is equal to E plus PV. So there are so many values, but एक फॉर्मूला निकालने के बाद इस तरह से कभी कभी फुल क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन और द डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स. थैंक यू वेरी मच.